Now I am going to share my screen as well. Okay. Basically, we do Mangala Charan also. So can we do Okay. Mangala Charan? Okay, of course we will do it. So हम सब prayers करेंगे एक साथ. Then हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे. शुरुआत करेंगे. शुरुआत करेंगे. शुरुआत करेंगे. Yes. Okay. So how to move it? What? You want it here? We can move it here, right? Okay, good. Om Agyan Timiranda Syagyanam Janashalakaya Shurun Militam Yanata Smashi Guravenamaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadama Agenda Dati Slopanatitam Vancha Kalpata Rupyascha Kripa Sinube Evacha Patitanam Pavan Yo Vaishnava Yo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadkara Shri Vasudeva Guru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are reading 9th chapter of Bhagavad Gita as it is, which is called the most confidential knowledge. Chapter 9, which is called the most confidential knowledge. You have everything on one page. Yeah. Okay, good. Because we read every day, no? So we start from where? We start from this. Yeah, Shloka 20. Shloka 20. Okay, chapter 9, the most confidential knowledge, Shloka number 20. Yes. It doesn't require translation, Yeah. right? Okay, Hare Krishna. Travidyamam soma pakuta papa yagyarishtva svargatim prarthayante tepunyam asadya surendra lokam ashnanti divyan divi deva bhogan. Hare Krishna. Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me undirectly, purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. This they understand. No need of translation. तो आप में से कोई हिंदी में पढ़ना चाहेगा? Right. या फिर मैं ही पढ़ देता हूँ हिंदी में. Okay. हिंदी भगवद गीता. How you will understand that they need translation or they don't need translation? How you will be understanding? Many devotees have Hindi Bhagavad Gita also. So whenever I do reading session, so first I read in English, then I call them to read in Hindi like that. Okay. हाँ पढ़िए जोशी. पढ़िए. Tell something. हरे कृष्ण प्रभु जी. जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की अन्वेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं. वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का आनंद भोगते हैं. बहुत अच्छा. तो आपने पढ़ा, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं. वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं. Okay. What about reading purport in Hindi? What do you think? Yeah, we can read. So you do it or Mataji? Do it, please. मैं पढ़ देता हूँ. So हिंदी में मैं पढ़ने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन. सब लोग सुनेंगे ध्यान से. सब सुन रहे हैं? Yes, no, yes. Maybe. Okay. Yes, no, maybe. So त्रय विद्या शब्द 3 वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है. जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है. आप में से कोई त्रिवेदी है? त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी. So actually in India it's Brahmanical, they use as a surname. Okay. द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी. Surname in passport. Yeah. Very In good. passport. Very good. तो जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज में आदर होता है. दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं
जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। Okay. दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप उच्चतर लोकों तथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इन लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि भी की जा सकती है। Okay. So here in this purport to this verse, it is said that one's senses should be purified. इसमें बताया गया है परपट में, तात्पर्य में, कि हमारी इंद्रियां जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। So there is connection between 9th chapter and 4th chapter. 4th chapter, which is called also knowledge, transcendental knowledge. 4th chapter is transcendental knowledge. This 9th chapter is the most confidential knowledge. And in 4th chapter, it was told that there are different kinds of austerities, of tapasyas. And the main idea of these tapasyas is to purify our existence and to elevate our consciousness. तो हम देखते हैं भगवत गीता में दिव्य ज्ञान जो अध्याय था उसमें भी बताया गया कि तपस्या बहुत जरूरी है। हमारी इंद्रियों को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है, सेंसेस को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। और हम गीता में देखते हैं अलग अलग जगहों पर भगवान श्री कृष्ण हमें ये उपदेश दे रहे हैं। तो इससे पता लगता है, इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने बताया और भगवान ने भी बताया कि कैसे हमें इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना कितना आवश्यक है। So different planets are mentioned here in this verse, in the purport to this verse, like Maharloka, Janaloka, Tapaloka. But one can achieve these planets only in case if his consciousness is sufficiently purified. देखें, हम देखेंगे इसमें कई सारे लोकों का वर्णन है, महरलोक, जनलोक, तपलोक। लेकिन हम इन लोकों तक कब पहुंच सकते हैं? जब हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाइड होगी, हमारी चेतना जो होगी वो शुद्ध होगी। यस। So in 18th chapter of Bhagavad Gita, it is told that no one should give up the processes of yagya, dana and tapasya. 18वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन चीजें जो हैं किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। Even those souls who are already purified, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। not purified, those who actually we have to find this verse in order to be exact. Anyway, even elevated souls, something like this, even elevated souls becomes even more purified by following yagya, dana and tapasya. तो ऑलरेडी जो एलिवेटेड सोल्स होते हैं वो भी जब ये यज्ञ, दान, तपस्या करते हैं तो दे बिकम मोर एलिवेटेड। Yeah. And Lord Rishabhkadev in 5th canto of Bhagavatam, he says that everyone suffers in this material world, but if to speak about human beings, they have to suffer voluntarily. They have to suffer voluntarily. Yes. Well, actually, it is not that Rishabhkadev says it. It is Srila Prabhupada's purport. तो ऋषभ देव का जो व्याख्यान आता है उसमें भी प्रभुपाद जी परपट में कह रहे हैं कि सबको अपनी इंद्रियों के कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है ना, नहीं चाहे वो जैसा भी हो, अगर भौतिक जगत में है तो उसको भोगना पड़ता है। तो इसलिए हम सब प्रयास करें, जल्दी जल्दी प्यूरिफाई करें, और उसका प्रोसेस 18वें अध्याय में बताया गया है। यज्ञ, दान और तपस्या किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। यस। Yes. Yes. But you see, because this sense gratification philosophy is so popular, so that's why it is not so easy to promote this idea that one has to follow any kind of tapasya. And some people who are leaders of so-called spiritual movements,
spiritual organizations, sometimes they really try to avoid the discussion of that we have to do some tapasya. तो हम देखते हैं कि तपस्या को जो है आजकल बहुत ही मतलब इस ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड में, एडवांस्ड वर्ल्ड में तपस्या को ज्यादा फेवर नहीं किया जाता है। कंफर्टेबल लाइफ को ही ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है। और हम देखते हैं कई सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स भी तपस्या को प्रमोट नहीं करते हैं। दे आल्सो प्रमोट लग्जूरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आजकल की करंट सिविलाइजेशन, करंट सोसाइटी का। This 19th chapter of Bhagavad Gita is really mystical because I'm trying to find this shloka about yagya, dana, and tapasya. And sometimes I'm able to find the shloka, sometimes it disappears. It disappears from 19th chapter. Where it is? Oh my God. Just I'm looking, I know it is here, but Hare Krishna, Prabhuji. What? Switch off. Switch it off. Okay, anyway, so tapasya is inevitable because sufferings are inevitable in this material world. 18.5. Oh, really? How I can skip it? How I could skip it? I don't understand what's going on. Yeah, so you see, it is written exactly. Dear friends, in Bhagavad Gita, verse 19.5. 18.5. 18 is तो 18वें अध्याय, there is no 19th chapter of Bhagavad Gita. There is no 19th chapter. तो 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये बताया गया, यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाः। This book 18.5. It is exactly what I told. Acts of sacrifice, charity, and penance are not to be given up. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purify even the great souls. तो इवन ग्रेट सोल्स मतलब महात्माएं जो हैं, जैसे इस श्लोक में बताया मनीष नाम, महात्माओं को भी ये चीजें प्यूरिफाई करती हैं। तो इसलिए सबको इस प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस को अपनाना चाहिए, जो कि है यज्ञ, दान और तपस्या। And again, if we will read this purport, we will see it is again about purification, and ultimately it is about achieving the supreme law. तो इस 18 अध्याय के 5वें श्लोक में भी हम तात्पर्य पढ़ेंगे, उसमें भी बताया गया है प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, और अंत में उसमें भी यही बताया गया है कि अगर हम भगवान सुप्रीम गॉड को अचीव करना चाहते हैं तो हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। This chapter is called Transcendental Knowledge. दिव्य ज्ञान का अध्याय भी जो सबने पढ़ा, Transcendental Knowledge, because ultimately it is about achieving Krishna. But of course, there are some stages before when one just purifies his consciousness in order to achieve some highest planetary systems, which is not our goal, which is not the ultimate goal. But of course, life is more comfortable there. We should admit it, but we should not be too much attracted by this idea to achieve this planet. तो हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कैसे हायर प्लैनेट्स, उच्चतर लोकों में जाने के बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। इसी श्लोक में भी बताया गया। तो हमारा लक्ष्य इन हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य, जैसे भक्ति योग में भी बताया गया, लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाना। It's like Ferris wheel. Srila Prabhupada gives this analogy of this Ferris wheel. क्योंकि ये किसके तरीके से? Everyone knows what Ferris wheel is. Ferris wheel मतलब जैसे झूला होता है ना, हम देखते हैं, it's like in big carnivals there are Ferris wheel. Yes. Yeah, so बड़े बड़े मेलों में हम देखते हैं ना, झूला लगता है, एक बैठता है, वो बार बार उसी में घूमता रहता है। तो ये एक्चुअली में हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाना उसी तरीके से है। प्रभुपाद जी, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, उस झूले में झूलने जैसा, गोल गोल झूले में बार बार उसी स्थिति में आने जैसा है। So it means what? It means that again and again, bar means again and again. पुनः पुनः. Okay, bar.
So you see, the situation is that if even one achieves the higher planetary systems, it is not for his constant position. तो भले ही हम उच्चतर लोगों को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो हमारा एक कांस्टेंट पोजीशन नहीं होगा. Because the spheres will always, it is always rotating. क्योंकि ये जो चक्र है ये हमेशा चलता रहेगा. Better to get out from the spheres will. सब अच्छा है कि हम इस चक्र से निकल जाएं. And how we can do it? We can do it by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस चक्र से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए. But anyway, it is someone's life that they do some pious activities and they achieve Indraloka. That's why it is mentioned here, because it is reality. Some people achieve this planet Indraloka. तो इसलिए कुछ लोग जो पायस पुण्य कर्मों में लग जाते हैं तो फिर इंद्रलोक को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन भक्तों का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए. It is exactly what is written here in this purport, that there is devotional service which begins with chanting of Hare Krishna Mahamantra, but unfortunately, dear friends, unfortunately, those who are simply official students of the Vedas become more interested in offering sacrifices to the different demigods like Indra and Chandra. तो पर्पट में भी हम देखते तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं. There are many, official student of the Vedas, पंडित हैं जो कि क्या करते हैं, of the Vedas, because become more interested in offering, sacrifices to the different demigods like Indra और चंद्र. इंद्र और चंद्र को sacrifice चढ़ाने में ज्यादा busy हो जाते हैं, और unfortunately they are official student of the Vedas. Actually, what does it mean to be official student of the Vedas? For example, we're situated now in a Delhi University base, and there are some people who take education in Delhi University officially. They are official students. Looks like it is normal to be official students. It is not something which should be condemned, right? What does it mean to be official student? You tell me. I first translate. ऑफिशियल स्टूडेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, उसको प्रभु जी बता रहे हैं. जैसे डीयू में कोई पढ़ा तो ऑफिशियल स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया. तो ऑफिशियल स्टूडेंट वेदास का क्या मतलब है? What does it mean? Official student. We have one nice verse from Chaitanya Charitamrita. तो इसके कनेक्शन में प्रभु जी एक चैतन्य चरितामृत से श्लोक आप सबको बता. देखें आप सब, प्रभु जी सभी शास्त्रों को पढ़ के आप सबको बता रहे हैं. Yes? Looks like he glorifies me a little bit, right? No. I just told the reality. Reality. Hare Krishna. Okay, so we have this verse in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Maybe we should put it on the screen. What do you think? Is it possible to open this verse? Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 19. Chapter 19 and verse 116. 19.116. Sorry, 18, of course. Today I 19, 18, 116. Okay, this one. Yeah. Push there. Thank you very much. आप सबको दिख रहा है, श्लोक दिख रहा है सभी को? मतलब अब दिखेगा. अब दिख रहा. It is from Chaitanya Charitamrita. Yastu Narayanam Devam Brahma Rudradi Daivatah Samatvi Naiva Viksheta Sapashandi Bhavitruvam Pashandi. So it is the definition of atheist, of non-believer. A person who considers demigods like Brahma and Shiva to be on equal level with Narayana is to be considered an offender or Pashandi. तो जो व्यक्ति देवी देवताओं को जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी को नारायण के इक्वल लेवल पर कंसीडर करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ऑफेंडर, अपराधी या पाषंडी, सा पाषंडी भवेत ध्रुवम.
Because you see, only Krishna is supreme, and demigods are demigods. They are subordinate to Krishna. भगवान श्री कृष्ण ही केवल परम भगवान है, बाकी सब देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के अधीन कार्य करते हैं. So there are different kinds of atheism. Atheism is not only the case when one denies the existence of Supreme Lord. There are different cases. For example, Bhaktivinoda Thakur in Jaiva Dharma, he says that one who knows Vedic injunctions, but he doesn't follow Vedic injunctions, he is also atheist. तो हम नास्तिकों की जब बात करते हैं तो नास्तिक के भी कई कैटेगरीज होते हैं. सुन रहे हैं आप? सबको आवाज आ रही है? हाँ, बीच बीच में रिएक्शन देते रहिए, ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है. सो नीलेपु समझ में आ रहा है? यस, हाँ, थम्स अप दिखा सकते हैं आप लोग. सो जैव धर्म में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि एथिस्ट भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक एथिस्ट वो होता है जो कि शास्त्रों के इंजंक्शंस को जानता तो है, शास्त्र में क्या बताया गया है, क्या ज्ञान दिया गया है, जानता तो है, लेकिन उनको जीवन में पालन नहीं करता है. एथिस्ट. तो दैट पर्सन, वो व्यक्ति भी कौन है? हाँ, आस्तिक, नास्तिक. वो व्यक्ति भी नास्तिक है, उसको भी एथिस्ट कहा जाएगा. एथिस्ट की इस प्रकार से कई कैटेगरीज होती है. So here, what does it mean in this particular context? What does it mean to be official student of Vedas? It means I know these names like Brahma, Shiva, Krishna, Narayana, and so on, but it is not clear for me that only Krishna or Narayana is supreme and the demigods are subordinate. तो ऑफिशियल स्टूडेंट ऑफ वेदास का मतलब ये है कि वो पढ़ते हैं लेकिन जानते नहीं है कि ब्रह्म, शिव आदि जितने भी, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि जितने भी डेमिगॉड्स हैं, देवी देवता हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं और भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं. And also there is such category of people who say that all God is one. और कुछ ऐसी कैटेगरी के भी लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि सब देवी देवता एक ही हैं. So they are also wrong. वो भी रॉन्ग है. So one question devotee is asking. Oh yes. Brahma, Vishnu, Mahesh is different. How? It is not written here how. It is written, question mark. It is written is different. Okay, my answer is yes. Yes, they are different. Brahma, Vishnu, Mahesh different हैं. Different. Yes. It is not written here how. So why should I ask on such question how it is different? If it will be written, how they are different. Maybe it is written now. Different duties. Different duties. Well, the duty of Brahma is to construct the universe, and the duty of Shiva is to destroy the universe, and the duty of Vishnu is to maintain the universe. They are, how do you call it, guna avatars, right? There are different duties, right? Yes. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, तीनों गुणों के अलग अलग अवतार हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तो इस प्रकार से हमें इसे समझना चाहिए. But Vishnu is supreme. Vishnu is supreme. It is confirmed by Bhrigu Muni many years ago. ये भृगु मुनि के द्वारा भी कंफर्म किया गया है, जैसे कि आप सबने सुना भी होगा. उस दिन हमने आप सबको बताया भी था भृगु मुनि की कथा के बारे में, अगर आप लोग उस सेशन में थे तो. Okay, let's go back to our verse from Bhagavad Gita. Yes. आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 21 पर. We are going to the next shloka, right? Will you tell? Okay, let's go. Actually, basically, I don't know what to tell about shloka number 20. Okay, let's go to the next one. 21 श्लोका पढ़ते हैं. Okay, 21 shloka parte what? पढ़ते हैं. Let's read. पढ़ते हैं. Okay, पढ़ते हैं. Там Буктва сварга лукам вишала, шине пунье марте лукам вишанти, эвам трей дхармам анупрапана, катагатам камакама labhante. Okay, so, and what does it mean? It means when they have thus enjoyed lost heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus
thus those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. So it is exactly about Ferris wheel that we discussed now. It is exactly about Ferris wheel that the fruit that they achieved is perishable. Yeah. तो इसमें भी यही बताया गया है कि जो रिजल्ट मिलता है वो कैसे पेरिशेबल होता है, अंत होने वाला होता है, हाँ, पुण्य कर्मों का, उसके बारे में इस श्लोक में फिर से बताया गया है. But anyway, they are followers of Vedas, and because of that, of course, they much more better than those materialistic people. But it is much more better to be Krishna's devotee. यहाँ प्रभु जी बता रहे हैं कि कैसे जो एटलीस्ट वेदों के ज्ञान को जानते हैं वो कैसे सेंस एंजॉयमेंट करने वालों से थोड़ा ऊपर कैटेगरी के होते हैं. यस, लेकिन उन वेदों को जानने वालों से भी सबसे सर्वोच्चम कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो कि ये जानते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है. Okay, now the question raises: should we read this purport in Hindi or in English? What do you think? What should we do? Anything? Anything. We have something in chat. What is it? Is there any difference between Sadashiva and Shiva? I'm not a Shiva expert. So Prabhuji is telling I am not Shiva expert. We're here in Krishna consciousness movement. I'm not Shivaite. I don't know the details. Sorry. प्रभु जी कह रहे हैं आई एम इन कृष्णा कॉन्शियस, मैं कृष्ण भावनामृत में हूँ, मैं शैवाइट नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इस तत्व के बारे में उतना डिटेल में नहीं पता है, शिव और सदाशिव. Yeah, I have no time to go to these details. I'm just struggling with my Java. Would you like to translate, or there is no need to translate? No need to translate. No need to translate. But okay. So what do we have in purport? So again, it should be you are going to read it in Hindi, or I should read them in English. I can read. Okay, then you read in Hindi. So हम लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. जिस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय भोग को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं. इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है. तात्पर्य पढ़ेंगे सब परपोर्ट. जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता है. आई रीड लाइक दिस वन. Okay. प्रभु जी को शॉक लग रहा है, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो. No, I'm not so shocked. But students they are used to. Okay. They are used to of my tone. Okay. So पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उन्हें पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है. जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्मादि यस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता. वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है. मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है. ये उसी मेले में जो जैसा झूला लगता है उसके मंदिर है. आप ऐसे झूले में झूले कभी झूले हैं? नहीं, आप थम्स अप थम्स डाउन करके बता सकते हैं. झूले हैं. मानो वह किसी चक्र में स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ऐसा वाला है ना. सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है. अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता है. You told something about Vaikuntha, but I don't see anything about Vaikuntha here in English text. Here it is written Vaikuntha Lok. Really? And here it is written spiritual word. Oh, yeah. So what do you think about such translation? Pathetic.
This is interesting. Okay, so you see this analogy with Ferris wheel is given exactly is given here, and what is important? It is important to attain perfection of knowledge. Attain perfection of knowledge. Those who don't, those who are attached to demigod worship, they are called here like people who didn't attain perfection of knowledge. तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि लिखा हुआ है, जो चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, तो जो इस फेरी व्हील में फंसता है, इस ज्ञान में जो नहीं स्थित होता है, तो वो क्या होता है, अंत में चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। यही इस पर्पट में बताया गया है। So if perfection of knowledge is there, and perfection of knowledge means aham sarvasya prabhavo, matak sarvam pravartate, iti matva pachanti mam, Buddha bhav samanvita. Buddha bhava samanvitaha. Krishna says that he is source of all material and spiritual worlds, and those who have some brain, they worship Krishna and they serve Krishna. So it is perfection of knowledge. For those people, blissful spiritual life is achievable. तो यहाँ पर बताया गया, जैसे पर्पट में बताया गया है, पूर्ण ज्ञान का मतलब ये, जो कि गीता में भी संदेश हमें मिलता है, क्या, अहम सर्वस्य प्रभवो, कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके प्रभु हैं, इसी को पूर्ण ज्ञान कहा गया है, और जो इस पूर्ण ज्ञान में सिचुएटेड होता है, उसी को चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। Yes. And those who didn't perfect their knowledge, for them this Ferris wheel is given. और जो इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए ये झूला झूलने वाला सिस्टम बताया गया है। Junivala system. हाँ, You call it Junivala system. yes. Okay. So you see, practical conclusion is such that our salvation is in spiritual knowledge, because it depends, do we have this knowledge or not. Salvation. तो मोक्ष मतलब क्या है? मोक्ष मतलब है इस दिव्य ज्ञान में स्थित होना, इस ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त करना ही असली साल्वेशन, असली मोक्ष कहलाता है। And where we can get this knowledge, this spiritual knowledge, this divya gyan, kriti prokashito, we get it from spiritual master. तो ये दिव्य ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है हमें आध्यात्मिक गुरु के द्वारा। And what does it mean? It means that we should accept his instructions, and we should do it willingly. We should do it joyfully. Yeah. तो हमें जो है गुरु के जो आदेश मिले, उनको पूरी इच्छा के साथ, पूरी खुशी के साथ हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। And this joy and willingness will be there if we understand that it is for our benefit, our spiritual benefit. और ये गुरु के आदेश को पालन करने में एक आनंद, एक जो आनंद है वो कैसे आएगा? जब हम ये जानेंगे कि इस ज्ञान को जो हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा ही जीवन सफल हो। Like for example, once Srila Prabhupada, he was asked by his disciple, is it true that spiritual master is sitting in his disciple's heart in on golden Visasana? On golden Visasana. हाँ, तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी, क्या सच है कि गुरु जो है शिष्य के हृदय में स्वर्ण के सिंहासन पर, गोल्डन व्यासासन पर निवास करते हैं, बैठते हैं एक शिष्य के हृदय में? प्रभुपाद जी ने क्या कहा? So he asked Srila Prabhupada, is it true or not? And Srila Prabhupada, he told, yes, it is true if you will let me go inside your heart. प्रभुपाद जी ने कहा, शिष्य ने पूछा, इज इट ट्रू और नॉट, इस शिष्य के हृदय में गुरु निवास करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अगर शिष्य उनको जाने देता है तो वो निवास करते हैं। अलाउ हिम टू गो। इसलिए हमें गुरु के निर्देश को अपने हृदय में उतारना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, तब हमें जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। And of course, it is a huge subject matter about guru-disciple relationships, how these relationships are established, and how
it develops and so on and so on. We have this book published by BBT, which is called Spiritual Mastering Design. There's a book. Yes, of course. At least in the Bhaktivedanta database, we have this book. It should be there in English language also. Yeah. A book like this. This much. Pages. तो गुरु और शिष्य का जो ये संबंध है, इसको बहुत डिटेल में चर्चा किया जा सकता है। इसके ऊपर भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट ने बुक भी पब्लिश किया है, उसको भी कभी आप पढ़ सकते हैं, गुरु एंड डिसाइपल। तो ये एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट मैटर है, इसके बारे में प्रभु जी बता रहे। So when we pray to spiritual master, we use this shloka from Gautanya Tantra, this famous shloka, Om Agyan Smirandasya Nanjana Shalakaya Shunritanyana Tasmaya Shri Gurave Namaha, which means that I was born in darkness of ignorance, but he came in my life with the torch of knowledge and he dissipated this darkness. तो हम जो गौतमीय तंत्र से डेली श्लोक पढ़ते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो उसमें बताया गया कैसे गुरु के माध्यम से हमारा जितना भी अज्ञानता का अंधकार है वो कैसे समाप्त हो जाता है। And this verse is from Gautanya Tantra. ये श्लोक गौतमीय तंत्र से। And when we are speaking about the darkness of material existence, it means not only tamasic life, when a human being is acting like an animal, only eating, sleeping, mating, depending, but it is also about these materialistic goals, like to be promoted to heavenly planets also. तो जब एक भौतिकतावादी जीवन की बात होती है तो उसका मतलब केवल यही नहीं है कि आहार निद्रा भय और मैथुन में लगना, उसका मतलब ये भी है, ये तो है ही, साथ ही साथ ये भी है कि उच्चतर लोगों के लक्ष्य प्राप्ति करने का लक्ष्य रखना, हायर प्लैनेट्स में जाने का लक्ष्य रखना, इसको भी भौतिकतावाद में ही काउंट किया जाता है। Any goal which is in this Ferris wheel dimension, this is produced by ignorance of material existence. तो कोई भी चीज जो हमें इस फेरिस व्हील, इस झूले में फंसा करके रखती है, वो भौतिकतावादी सिद्धांत होता है। And ignorance is such that there is Ferris wheel, and of course when we are here in this material world, there is variety of this life. We can get different experiences, but till we are here in material world, the spiritual bliss is unachievable for us. If we are not in spiritual abode, if we are not in spiritual world, this experience that we can get in spiritual world is not achievable. तो इसलिए जब तक हम आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक वो आध्यात्मिक लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? गोल इज गोलोका। Oh, but I didn't tell this, right? This formula they all know. Okay, Hare Krishna. So you see, what is your question? I understand you. Maybe you should just open pen. Pen is better. प्रभु जी ने एसी फैन कुछ नहीं चलाया हुआ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरे को गर्मी लग रही है, थोड़ा चला लूं क्या? Yeah, I am accustomed when air doesn't move at all. In Russia. Yes. तो प्रभु जी कह रहे हैं मुझे आदत है रशिया में उस जगह पर रहने की जहाँ एयर मूव भी नहीं कर पाती। -40, -20, -30। Not all the time. विंटर्स में वहां पर -20, -30 तक टेम्परेचर जाता है। प्रभु जी कह रहे हैं मुझे उस स्थिति में भी रहने की आदत है। Okay, so what we're speaking about? What we discuss? Spiritual world. Spiritual. Oh, yes, of course. We are discussing spiritual world. So, what's going on in the spiritual world? We can get this knowledge from Srila Prabhupada's books. तो क्या हो रहा है आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के मिलेगा।
And of course, it is not that Srila Prabhupada gives the whole information about spiritual world in his books. तो ऐसा He gives just some basics. हाँ, तो ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ने सारा ज्ञान दे दिया है, बेसिक ज्ञान जरूर शिला प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है. And when Srila Prabhupada, he was asked many times different confidential questions, some details and so on. Usually he was answering like this: when you will go there, you will see. लेकिन प्रभुपाद जी से जब कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें डिटेल पूछने लगता था, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जब आप वहां जाइएगा तब देखिएगा. Yes, because well, how we can understand all the spiritual subject matters with our consciousness, which we have now. How we can do it? तो हम अपनी इस भौतिक चेतना से कैसे हम आध्यात्मिक जगत के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं. It is like, for example, we have a book, and in this book it is described something about foreign country, about Russia or US, but you've never been there. And of course, you can get some idea of US or of Russia or of Brazil and so on. But if you will go to this Brazil or Argentina or whatever, you will see that there is a difference between this picture that is in your mind and Brazil as it is. Yeah. As it is. You know? तो बहुत अच्छा प्रभु जी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे कोई सपोज कोई पुस्तक पढ़ता है, बुक पढ़ रहा है, और उस बुक में एक्सप्लेनेशन है रशिया के बारे में, यूएसए के बारे में, ब्राजील के बारे में, तो उसमें थोड़ा आइडिया दिया जाता है. उस आइडिया के माध्यम से हम कुछ पिक्चर बना लेते हैं, कुछ मन में रूप बना लेते हैं उस जगह का. लेकिन जब हम एक्चुअली में रियलिटी में उस जगह पर जाते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं अरे वाह ये तो उस पिक्चर से बहुत अलग है, और वहां पर जा करके एक्चुअली में हमें उसका असली पिक्चर प्राप्त होता है. It is like, for example, in 2012, as you wish. Okay, yeah. Okay. It is like, for example, in 2012 when I came to Vrindavan first time. Before that, I heard many times about Vrindavan, what it is, and it is very exalted place, and that you should be very conscious. You should behave very consciously, and so on and so on. I would not say that this was useless, this knowledge was useless, this information was useless. I would not say it like this, but when I came to Vrindavan, I understood that I knew nothing about it. तो प्रभु जी बता रहे हैं जब 2012 में पहली बार वो वृंदावन आए, तो उन्होंने पहले वृंदावन के बारे में सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, लेकिन जब पहली बार वृंदावन आए, देखा कि ये तो जो मैंने अभी तक पढ़ा वो दैट वाज नॉट कंप्लीट, वो पूरा नहीं था वो ज्ञान. और वहां पर जब गए तो देखा वाह ये तो बिल्कुल ही रियलिटी है. तब वहां पर जा करके इनको असली वृंदावन देखा. Of course, this knowledge was useful in the sense that I was feeling myself supported by this knowledge, but I wouldn't say that this knowledge gave me the whole picture. तो उस ज्ञान जो पहले से था वृंदावन के बारे में, उससे सपोर्ट मिला वृंदावन को जानने का, हाँ, लेकिन वहां पर जा करके फिर पूर्ण ज्ञान मिला कि अच्छा असली में वृंदावन कैसा होता है. So the same way Srila Prabhupada, he says, if you want to know the details about covered boys or gopis and so on, you just go there and you will see everything with your own eyes. And you can ask them, you can ask your questions to them, and they will answer. तो बहुत अच्छा बता रहे हैं प्रभु जी कि प्रभुपाद जी यही कहते थे कि अगर आप गोपियों के बारे में, ग्वाल बालों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको वहां जा करके जब आप देखेंगे तब आप असलियत में जान पाएंगे कि कैसे हैं, क्या है, उनसे आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और डिटेल में और एज इट इज जान सकते हैं. But of course, some basics he explains that there is no Janma Mrityu Jaravyad in spiritual world, and there is no and this abode, spiritual abode, is not illuminated by electricity, so we don't have to pay for electricity. So, जैसा कि गीता में भगवान बताते हैं कि उस धाम में जा करके कोई भी ना तद भास्यते सूर्यो, वहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं चाहिए होता है. सो वहां पर कह रहे हैं कि जैसे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना पड़ता है. सो ये वहां पर जा करके पता लगेगा हम लोग को. सो बट कुछ बेसिक आइडिया हम लोगों को शास्त्रों में दिया गया है, प्रभुपाद जी ने बेसिक आइडिया दिया है जिसके आधार पर हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं. So spiritual life starts from this basic
understanding of what is spiritual world, what is our prayojan, our goal. And it also starts from our faith in spiritual masters' words. तो भक्ति की शुरुआत ही होती है, आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। लक्ष्य पता होना चाहिए हम सबको, गुरु के आदेश को जीवन में अपनाना चाहिए, और गुरु के आदेश को जीवन में अपना के कैसे हम लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, यहीं से भक्ति की शुरुआत। So here in this purport it is written about eternal life full of bliss and knowledge. यहाँ पर पर्पट में बताया गया है ऐसा जीवन, नित्य जीवन जो कि फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, जिसमें सुख है, सुविधाएं हैं, उसके बारे में बताया गया। And in this text number 21, it is written about people who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas. और इसमें भी बताया गया कि कैसे जो वेदों के आधार पर, तीनों वेदों के आधार पर सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, इंद्रिय सुख करना चाहते हैं, उनका क्या होता है। Okay, and so you see their goal is sense enjoyment. Sense enjoyment means the conception of happiness in mode of passion. तो इसलिए बताया गया है यहाँ पे, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि इंद्रिय सुख, वेदों में ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय सुख का ज्ञान दिया गया है, और ये किससे डील करता है, रजोगुण से डील करता है। Different people have different conceptions about what happiness is. अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होता है कि हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी क्या होती है। And the conception of sense enjoyment or conception of happiness in mode of passion, it is about that I have my senses, there are some sense objects, and happiness is to connect them, is to connect my senses with these sense objects. रजोगुण का मतलब यही है कि इंद्रियां हैं और इंद्रिय भोग की विषय हैं, वस्तुएं हैं, उन दोनों को जोड़ना, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से जोड़ना उनके सुख के लिए, इसी को जो है भौतिकतावादी जीवन का आधार बताया जाता है, और यही होता है रजोगुण। So if there is such category of people who think that there is such happiness and there is no other idea of happiness beyond. और कई भौतिकतावादी लोग होते हैं जो ऐसा भी सोचते हैं कि यही खुशी है, इसके ऊपर तो कोई खुशी है ही नहीं। Oh, that's all. Okay. So, but you see, if we will tell them that you people, you have to do some tapasya, they will not accept this process, because tapasya means to go out from so-called comfort zone. तो तपस्या का अर्थ क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और अगर ऐसे लोगों को बोला जाए कि आपको तपस्या करनी है, वैसे लोग फिर ये तपस्या नहीं कर पाएंगे। But the process of tapasya means we go out from comfort zone, but we do it not just to torture ourselves. We do it because we understand that if we go out from this comfort zone and we do something which will be pleasant for Krishna, then Krishna will give us some more mercy, and we also will be growing spiritually because of that. So ये जो तपस्या हम करते हैं, इसका लक्ष्य हमें अपने आप को कष्ट देना नहीं होता है, इसका लक्ष्य होता है भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो एक भक्त को फिर स्वीकार। So this sense enjoyment conception, it is something which is opposite to spiritual life. तो सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति जो है, ये अपोजिट है स्पिरिचुअल लाइफ के, आध्यात्मिक जीवन के। तो अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, सेंस एंजॉयमेंट को कम करना पड़ेगा। Of course, we have different things that are pleasant for our senses in Krishna consciousness. We can take nice gulab jamunas, rasagulas, kalvalis, nice kirtanas, and so on and so on. So we can satisfy our senses legally in Krishna consciousness. But the point, the essence of the spiritual life is not just to satisfy senses. We can do it, and we have this need to have our senses satisfied. But it is not the essence, it is not the highest goal. तो जैसे हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं कृष्ण कॉन्शियस वे में भी, जीवा को संतुष्ट करने के लिए प्रसाद पाते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, और
हम कीर्तन सुनते हैं, हाँ, बट यही लक्ष्य नहीं है। इंद्रियों को संतुष्ट करना ही लक्ष्य नहीं है, हमें इसके भी ऊपर उठना चाहिए, तभी हमें आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो सकती Bhakti is about how to satisfy Krishna. Is Krishna satisfied with my endeavors, activities, and so on? Or not? है। तो भक्ति का अर्थ ही है क्या कृष्ण संतुष्ट हैं। कृष्ण अगर संतुष्ट हैं तो वही भक्ति कहलाती है। And because there is no such habit to satisfy Krishna or to be concerned about his happiness, that's why we accept spiritual master who is Krishna's representative, and he teaches us this mood of service. तो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर वो हैबिट नहीं है भगवान को संतुष्ट करने की, भगवान को खुश करने की, हाँ, हम अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। तो भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो हैबिट है ये हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। गुरु हमें निर्देश देते हैं, गुरु हमें सिखाते हैं कैसे, गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं। We meditate on how he is interested to satisfy Krishna. Then we approach and then we take some instructions. To take some instructions means to take some part of this mission or to satisfy Krishna and fulfill his desires. So we become part of this. So हम जब गुरु को देखते हैं कि कैसे हमारे गुरु कृष्ण को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, तो हम उनके पास जा करके फिर पूछते हैं हम भी कैसे कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं, हम भी कैसे इस मिशन में आपका सहयोग कर सकते हैं। फिर हमें जो निर्देश देते हैं उन निर्देशों का आज हम जीवन में पालन करते हैं, जिससे हमें भी जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। And our imperfect senses, they can tell us that Supreme Lord is somewhere far, far away from us and so on. But it is not so. If we practice spiritual life, devotional service, we can feel His presence in our life. तो अगर हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो हम भगवान के प्रेजेंस को भी अपने जीवन में फील कर सकते हैं। Especially when we chant Hare Krishna Maha Mantra. और Hare स्पेशली Krishna, कृष्णा 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 Hare हरे Hare, हरे Hare राम Hare Rama, राम Rama राम Rama, हरे हरे। और स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम भगवान के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। It is really important to consider all these demigods that they are just Krishna's servants. और इस बात हमें जरूर पता होनी चाहिए, जितने भी देवी देवता हैं ये सब भगवान के सर्वेंट हैं, दास हैं। इस भाव से हमें उनकी उपासना या फिर इस भाव से उनका सम्मान करना चाहिए। And it is not a problem to bow down before their notice, but consciousness should be that they are not supremes. They are Krishna's servants. So we just offer our respect to their devotion. तो इसलिए देवी देवताओं के सामने सर झुकाने में कोई भी गलती नहीं है, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन भाव हमें क्लियर होना चाहिए कि ये सब भगवान के दास हैं, भगवान के सर्वेंट हैं, और इस भाव से जब हम उनको प्रणाम करते हैं वो भी खुश होते हैं और हम भी खुश। And we can even ask these demigods to fulfill some of our desires, spiritual desires. For example, we can ask Lord Shiva to help us in spiritual life. Why not? And we can ask Lord Ganesh to remove the obstacles on our spiritual path. Why not? तो हम देवी देवताओं से वर भी मांग सकते हैं कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े। शिव जी से हम वरदान मांग सकते हैं कि कैसे वो हमें, वो वैष्णव है, वो हमें भी एक अच्छा वैष्णव बनाए। गणेश जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि गणेश जी हमें भी जो है हमारे विघ्नों का विनाश करें, विघ्न विनाशक हमारे है ना दिक्कतों को सॉल्व करें। तो इस प्रकार से हम उनसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं। It is much more better than to ask demigods to fulfill some gross material desires like new house or new car or new wife. New wife. So देवी देवताओं से ये मांगने से अच्छा है कि हम आध्यात्मिक चीजें मांगे, भौतिक चीजों को मानने से कोई लाभ नहीं। It is not the problem for them to fulfill our gross material desires because they are very powerful. But if they are powerful, just let's go down before their spiritual strengths and their devotion, and just let's ask them to help us to develop this bhakti and to get out from this Ferris wheel of material existence. तो इसलिए देवी देवताओं के पास जा करके हमें उनके उस भक्ति, उस जो जिस प्रकार से वो भगवान की सेवा में लगे उस भाव को हमें
आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनसे भी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान के प्रति हमारे अंदर ये भाव डेवलप। Hare Krishna. So now we have got the question in chat. And who is asking what? चिराग, Chirag. Okay, good. So the question is, Prabhuji, being in Krishna consciousness, can we celebrate festivals like Mahashivaratri and Ganesh Chaturthi? Well, some devotees, they celebrate Shivaratri, but I've never heard that they celebrate Ganesh Chaturthi. I've never heard this. And Srila Prabhupada actually, he didn't introduce Ganesha worship in ISKCON. When someone asked him, one disciple asked Srila Prabhupada, can he worship Ganesha's deity? Srila Prabhupada wrote in the letter that because of Ganesha worship, one becomes very rich. So if by worshiping Ganesh, you will be able to bring $50,000 every month to our movement, then I allow you to do this worship. So जैसे एक भक्त ने पूछा कि हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं मूर्ति की, तो भाई ने कहा गणेश जी बहुत लक्ष्मी देते हैं, तो अगर आप हमारे इस्कॉन के लिए $50,000 हर महीने लेके आ सकते हैं, तब मैं आपको अलाउ करूंगा गणेश जी की पूजा करने के लिए, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करूंगा। This letter is there in Srila Prabhupada Shikshamrita, in this compilation of his letters. If you will be bringing me $50,000 every month, then I will allow you. If you will be getting this money because of your Ganesha worship. अगर गणेश पूजा करके आप $50,000 ला सकते हैं, तब मैं आपको अलाउ करूंगा। Or maybe 5,000. It looks like $50,000. Okay, anyway, so it is not introduced in ISKCON. Ganesha worship is not introduced in ISKCON, but at the same time, it is not so much prohibited. And you see, the standard answer in this question is that you just ask your spiritual master. You just ask your spiritual master if he allows you to worship particular murti or particular demigod. It is okay, otherwise no. तो हमें आइडियल आंसर ये है, गुरु से पूछना चाहिए, गुरु अगर अलाउ करते हैं तो हमें करना चाहिए। Okay. Next question. What are the ways of engaging in tapasya for devotee? Okay, let's open Bhagavad Gita 17th chapter of this browser, and we will read some shlokas from 17th chapter. 17. Bhagavad Gita 17th chapter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare 17th chapter of Bhagavad Gita. You do like this, right? Good. So these austerities are described here. This is the way how you get the whole text on the page. Okay, good. So we have it is somewhere from 1714 or something like this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. I think we should ask our audience about this pen. Can they hear us clearly? क्या आप सुन पा रहे हो? नीलेश, साफ आवाज सुनाई दे रही है प्रभु जी की? No problem. Right? Okay, good. So, verse number 1740. 17वें अध्याय का 14वां श्लोक. Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master, the superiors, like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence. It is about body. So the next verse is about speech. Austerity of speech consists in speaking words that are truthful,
pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. And the next verse, 17:16, explains the austerities of the mind. And satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and purification of one's existence are the austerities of the mind. So basically, it is about that we should develop some good habits, we should work on our character, and in such way, these Vaishnava qualities will be there. So you see, this austerity to work on our own character, to correct ourselves, much more easier to approach other people to correct them than to change ourselves. तो यहाँ पर जैसे आपने पूछा प्रश्न तपस्या के बारे में, तो 17वें अध्याय के आप देखेंगे श्लोक का नंबर 14, 15 और 16 में डिटेल में बताया गया है, जिसमें हम सबको बताया गया है कि शरीर की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है और मन की तपस्या क्या है। तो दूसरों को बताने से अच्छा है कि हम खुद पर इसका कार्य करें, खुद को इसको जीवन में अपनाएं, खुद के जीवन को प्यूरिफाई करें। Okay, so we have some questions in chat, right? Okay, let's see. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Any book suggestion? Any book suggestion for Krishna? Any book suggestion regarding what? Prabhu, Nilay Prabhu? Maybe regarding spiritual life. Any book suggestion regarding? Hare Krishna. Your sound system works or? Very less. Very less. So how we can get the answer? Maybe right. Okay. So next question we can take Simran. Krishna's abode, his service, or he himself? What should be our spiritual goal? Krishna's abode, his service, or he himself? Very simple. He himself, who is situated in his abode, and we should serve him. We should serve him here, and we should serve him there also. And we serve him here because we have to be trained. Actually, we have to be trained. Otherwise, if we are not ready for this, how we can continue with this devotional service and spiritual abode? So जैसा कि आपने प्रश्न पूछा सिमरन, Krishna's abode, his service, or he himself, तुझे बहुत अच्छा बताया. Krishna himself living in his abode और वहां पर उनकी सेवा कर. So इस प्रकार से all the three things. Yes, of course. Why should we distinguish? Why should we distinguish? Yes. बहुत अच्छा. Of course. Thank you. Okay. So Nilay is asking regarding anything which Prabhuji found mind changing or worthful. Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita as it is, Nilay Prabhu. Just read Bhagavad Gita as it is and get this knowledge as it is. Get this knowledge as it is. Mind changing and worthful. Yes, he's showing. Very good. Very good. Okay. Kaushal, you will be pleased to know that president of ISKCON KTM is also from Russia. KTM is what? Kathmandu, Nepal. Patri Prabhu. Patri Prabhu. Well, he's from Ukraine. He's from Ukraine, Prabhu. Oh, Ukraine se. But it is both countries were from USSR, so Yeah, in USSR. that sense, it is all the same. Yeah. Next question. Of course, this USSR doesn't exist for 30 years already. It doesn't exist, but anyway, we feel some connection. Okay, Jatin Prabhu का प्रश्न है, why doing tapasya makes God happy if it gives us pain until we achieve a stage of permanent happiness of prema bhakti? Okay, so it makes God happy because he is able to see that we are interested to achieve his spiritual abode. We want to become closer to Krishna, and तो भगवान देखते हैं कि भगवान खुश नहीं होते, भगवान इस चीज को देख के खुश होते हैं कि ये कितना डेस्परेट है मेरे धाम को आने के लिए, कितना प्रयास कर रहा है मेरे पास आने के लिए. भगवान इस चीज को देख करके ज्यादा खुश. For example, we read Bhagavad Gita as it is, and we get this knowledge as it is. And Krishna is situated in everyone's heart, so he is able to understand that there is someone who is trying to understand me. And he appreciates this because there are a lot of people and other living beings who are not interested to know who Krishna is. तो जैसे कि भगवान जब देखते हैं कि ये लोग गीता पढ़ने में इतना मेहनत कर रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं,
तो फिर भगवान हमारी सहायता करते हैं, हमारे हृदय में जो बैठे हैं वो हमें फिर हमें बताते हैं कि मैं ऐसे हूँ, मुझे जानो। इस तरीके से भगवान हमारी सहायता, जब हम देखते हैं तो भगवान देखते हैं कि ये कितना प्रयास कर रहा है। So the goal of this spiritual life, of this devotional service, is to make us closer to Krishna. तो आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअल लाइफ का गोल है हम सबको भगवान के क्लोज जाना। But because we are conditioned and because we attached to materialistic conceptions and so on, because of that, when we are trying to become closer to Krishna, it becomes painful. भौतिकतावाद का इतना असर है कि जब हम भगवान के करीब जाने लगते हैं तो बहुत ही कष्ट होता है, क्लेश होता है। This process of purification on spiritual path, painful like the process of getting rid from any disease, for most of diseases in medicine, yeah, when we're trying to get rid from disease, it is also usually it is not a pleasing process. तो किसी भी बीमारी से भी छुटकारा पाना बहुत ही आरामदायक प्रोसेस नहीं होता है। किसी बीमारी से भी कोई अगर छुटकारा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी उसको कष्ट झेलना पड़ता है ना। नहीं, इसी प्रकार से जो हम आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ते हैं तो कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत ही प्लीजिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। So when we go to doctor and when we take some treatment which is given by him, doctor's goal is not to torture us. His goal is to make us free from this disease. But it is natural situation that this process of to become recovered from disease, this process is not so pleasing. तो इसलिए प्रोसेस भले ही प्लीजिंग ना हो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बट डॉक्टर यही चाहता है कि क्योर हो जाए पेशेंट और अच्छे से अपने जीवन को जिए। Or for example, you take surgery operation. Ultimately, it is for your own benefit and to become healthy. But the process is not so. It's quite painful. जैसे जब सर्जरी भी हम कराने जाते हैं तो दर्द होता है, कष्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली उससे बेनिफिट ही होता है, मरीज ठीक हो जाता है। The same way we follow this path and our anarthas, our bad qualities becomes cut, and it is also quite painful sometimes. जब हम भी जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो अनर्थ करते हैं, उससे कष्ट होता है, सर्जरी होता है, तो हमें परेशान नहीं। Just offer this pain to Krishna, that I experience this pain, but I follow this path in order to become positive. So just accept the circumstances of your life. इसलिए इस पेन को स्वीकार करते हुए, सर्कमस्टेंसेस को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और भगवान के चरणों में शरणागति बढ़नी चाहिए। It is the process how we are trying to become free from this disease of material existence. ये प्रोसेस ही है जिसके द्वारा हम भौतिकतावाद के रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। Kaushal raised hand. It's written here. Kaushal raised hand. Yes, I see. But you can hear him. So how we can hear this question, because our sound system is not doesn't work properly, right? So what should we do? Kaushal, maybe you can write your question in the chat. What do you think? Is it possible? Yeah, you can write. Okay. He writes, can I speak? Can I speak? So it works or not? Your sound system works or not? Let me really find the headphone. We're searching for headphone. Just give us a few seconds, okay? We're just searching for headphone in order to hear your question nicely. So did you find? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Oh, headphones. So don't think What to do? I have lost. You can ask tomorrow. He lost headphones, yes. So Redaksha Madhava Prabhu's proposal is to take this question tomorrow. What do you think of this? Tomorrow morning we can take this question because it's time also now.
So And tomorrow you will find your headphones. tomorrow we'll arrange. Okay, good. Tomorrow 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. we'll have a session again. Okay. ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन तो होगा ही. So tomorrow morning 7 a.m. again we'll meet and we'll discuss about Krishna consciousness. Tomorrow's topic is importance of discipline in life. तो मिलते हैं कल फिर से. प्यारे भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बहुत बहुत धन्यवाद. We are very thankful to Madhava Murari Prabhu for giving his wonderful association to all of us. And yes. Something was written about Govardhan. Yeah, something about Govardhan. Yeah. Prabhuji will be going for Govardhan Parikrama with Aligarh devotees of ISKCON. Okay, great. ठीक है. Sleep. Okay, good night. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. We'll meet tomorrow again. Tomorrow is Ekadashi. Tomorrow is Ekadashi also. Don't eat bread. Don't eat. Don't eat bread. Okay.